starting a generation and recombination process. Basically, this is a new topic we are having. And under this topic, we are going to study about basically the equilibrium relationship. See what happens. If suppose in a semiconductor material, if only the recombinations takes place and no generation will take place. What is the meaning of generation and recombination? First of all, it is very much important. So we should understand what is the meaning of generation and recombination. So the generation, it means generation of charge carriers. This generation word indicates the generation of charge carriers. So electrons and holes pairs generation. The electron and hole pairs are generated. And the second is called as a recombination. Electron and hole pairs are generated and they are segregated and they are helping in a conduction of current. But meanwhile, when an electron loses its energy, it comes back to valency band and there may be a chance of that it recombine. First. Second, the electron which is in a valency band and moving from covalent to covalent, so it creates breaking of bond and as well as the generation of covalent bond. So this is called as a recombination. When an electron and hole recombines with each other, this process is called as a recombination process. So it happens continuously, the combination as well as a recombination. And this can be represented with the help of this equation, which is very important equation called as a thermal equation and thermal relationship. So this equation is very much important. We have to take care about that. That number of charge carrier concentration P, number of hole concentration P, number of electron concentration N, and their product should be equals to Ni square. Ni, it means this is the concentration of intrinsic semiconductor. This is basically what the concentration of intrinsic semiconductor. So that should be maintained always. वो maintain रहना चाहिए. When this is the equation maintained, then the system or crystal remains maintained. Because if suppose what happens continuously, if suppose there is a generation of charge carriers, कुछ time बाद क्या होगा? After some time, all the electron hole pairs, all the covalent bonds will be broken up. सारे टूट जाएंगे. जब वो सारे के सारे टूट जाएंगे, then what will be the happen with the lattice? Lattice ही नहीं बचेगा. So there should be some equilibrium कि number of charge carriers अगर produce हो रहे हैं तो there should be some breaking of bonds too. टूटने भी हैं और बनने भी हैं. So this equation comes with this Pn equals to Ni square. So it means holes and electrons का जो product है, जो concentration है, वो holes और electron की concentration that should be equals to Ni of square. If access carriers are introduced in the semiconductor so that Pn greater than become to Ni square, we have a non-equilibrium situation. So अगर ऐसी situation आती है जहां पर किसी भी एक की concentration increase होती है, if access carriers are introduced, कोई भी P बढ़ गया या N बढ़ गया, दोनों में से कोई भी अगर charge carrier बढ़ जाता है, Pn equals to greater than N square, so we have called this situation is a non-equilibrium situation. The process of introducing access carrier is called as a carrier injection. जो हम करते हैं, carrier को inject करते हैं. Most semiconductor devices operate by the creation of charge carriers in excess of the thermal equilibrium value. We can introduce access carrier by optical excitation or forward biasing p-n junction discuss. तो डोपिंग के बाद तो आपने जो जनरेट किया वो पी और एन जनरेट हो गया. पी और एन की कॉन्सेंट्रेशन वही होगी जो एन स्क्वायर की होगी. क्यों? क्योंकि आपका जो लैटिस था उस लैटिस में आपने इंसर्ट किया था. यू हैव इंसर्टेड वन एटम. तो उस समय तो आपका ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन मेंटेन रहेगी. लेकिन अगर आपको सपोज करो एक्सेस करनी है तो देयर इज अ इंजेक्शन प्रोसेस. कंप्लीटली यू हैव टू क्रिएट अ चार्ज कैरियर, एक्सट्रीम चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन और होल्स आपको बढ़ाने ही पड़ेंगे. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ non-thermal non-equilibrium situation. It happens. ठीक है. When the thermal equilibrium condition is disturbed, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है Pn does not equals to Ni square, processes exist to restore the system to equilibrium. Pn equals to Ni square. देखना, जब ऐसी सिचुएशन आई, the situation in which this equilibrium disturbs, जब ये डिस्टर्ब हो जाता है, उस टाइम पर processes exist, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं to restore the system to equilibrium, that is Pn equals to Ni square. In the case of injection of access carriers, the mechanism that restores equilibrium is recombination of injected minor carriers with the majority carriers.
तो अब इस केस में क्या हो रहा है, इन द केस ऑफ इंजेक्शन, अब इंजेक्शन किया आपने एक्सेस कैरियर्स, द मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म की वजह से इक्विलिब्रियम रीस्टोर होता है with the majority carriers depending on the nature of the recombination process and released energy that result the recombination process can be emitted as a photon or dissipated as heat to the lattice. It means the number of charge carrier जो आपके एक्सेस हैं उन एक्सेस एनर्जी का लॉस होगा, जिस किसी का भी होगा, या तो एब्जॉर्प्शन होगा अगर फोटॉन्स हैं, हाँ होल्स हैं तो एब्जॉर्प्शन होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं ज्यादा एक्सेस में तो उनका एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। क्यों? एक्सेस होने की वजह से वी हैव टू मेंटेन द सिस्टम ट्राई टू मैनेज इट्स इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम मैनेज करने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा तो लैटिस डिस्टर्ब हो जाएगा व्हिच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो व्हेन द फोटोन इज एमिटेड, जब एक फोटोन एमिट होता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। अब एक्सेस हो गए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज्यादा बन गए, अब इस सिचुएशन में अगर आपका इलेक्ट्रॉन या होल एक्स्ट्रा है तो उस कंडीशन में फोटोन एमिट होंगे, निकलेंगे फोटोन, एब्जॉर्ब करेंगे फोटोन। तो जो फोटोन का ऑब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड एज अ रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज अ नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। समझ में आ गई बात? तो जब when simple when we are talking about the recombination of electron and hole pair, if photon emitted, this is called as a radiative recombination. When photon does not emit, we call it as a non-radiative recombination. Recombination phenomena can be classified as direct and indirect process. It can be divided into two categories. One is the direct, another was the indirect process. Direct recombination, also called as a band-to-band recombination, usually dominate in direct band semiconductors such as gallium arsenide, where indirect combination via band gap recombination contains the dominantly in band gap. हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स पढ़ चुके हैं, तो जिसमें कॉम्बिनेशंस आपके बैंड टू बैंड हो रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर, और डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स में ही आपके ये रिकॉम्बिनेशंस होते हैं जिनको कि हम डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशंस कहते हैं। और नॉन रेडिएटिव जो आपके जो होते हैं, और वो सेमीकंडक्टर्स ही वही है, जैसे गैलियम आर्सेनाइड हो गया, और इनडायरेक्ट में भी वही होता है, दैट हैपेंस, जिसमें इनडायरेक्ट बैंड गैप कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब ये डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन और इनडायरेक्ट रिकॉम्बिनेशंस होते क्या हैं, दैट वी हैव अ टारगेट टू अंडरस्टैंड। Consider a direct band semiconductor, so that's we have taken an example here. If you see here, so we have some EC, it means this is the energy level of conducting layer, and EV is the energy level of the basically valency band. So this is conduction band, energy band. So we have here, so let's study about that. Consider how we have to simply consider about something. Consider a direct band gap semiconductor in thermal equilibrium. We have a semiconductor जो thermal equilibrium में है. The continuous thermal vibration of lattice atoms causes some bonds between neighboring atoms. Natural बात है, we have already talked about. ऐसा होता है कि जैसे ही एक एटम आता है अपने आसपास के एटम के साथ बॉन्ड बनाता है. Atoms to be broken. When bond is broken, जब वो bond बना हुआ bond टूटता है, an electron hole pair is generated. Very simple phenomena. In terms of the band diagram, the thermal energy enables a valency electron to make an upward transition to the conduction band. Simple. We have a covalent bond. Under this covalent bond, when it is broken up, टूटा, एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक होल निकला, होल वैलेंसी में रह गया, इलेक्ट्रॉन इज जस्ट रीचिंग टुवर्ड्स द कंडक्शन. It is going to conduction band. When it is reaching to the conduction band, under this situation, it is just absorbing some energy. इसको कुछ ना कुछ energy मिला, ठीक है? So if the terms diagram, on the basis of that, in terms of the band gap diagram, the thermal energy enables a valency electron to make an upward transition to the conduction band, leaving a hole in the valency band. Valency band में hole रह गया. This process is called as a carrier generation and is presented by the generation rate GTH. So if you see here we have this GTH, generation. So this generation is called as a carrier generation, number of electron hole pair generated. So this is shown in diagram. When an electron makes a transition downward, जब एक electron conduction band से नीचे आता है, when it comes to downward, from the conduction band to valency band, an electron hole pair is
annihilated. This reverse process is called as a recombination. This comes in a recombination and it is represented by the recombination rate RTH. So GTH is the basically generation rate. It means electron and hole pairs are breaking up and electrons are generating. And when electrons comes back, जब वो वापस आता है, when it comes back to its position, from conduction to valency band, this is called as a recombination, and this is indicated by the recombination rate. This process is indicated in figure A. It is presented in by this. Under thermal equilibrium condition, the generation rate GTH must be equals to RTH. So when we have a thermal situation, thermal stabilization, under some thermal stabilization, this GTH and RTH remains equal. And during that, this mass action law, Pn equals to Ni square is maintained. ये maintain रहता है. When excess carriers are introduced to a direct band semiconductor, the probability is high that electron and holes will recombine directly because the bottom of conduction band and the top of the valency band are lined up and no additional movement is required for the transition across the band gap. The rate of direct recombination is expected to be proportional to the number of electrons available in the conduction band and the number of holes available in the valency band. So what is happening here? Now the thing is here, when under non-thermal condition and injection is taken place, जब आपने inject कर दिए charge carriers, तो very important, ध्यान से सुनना, जब हमने charge carriers को inject कर दिया, then what is happening? When excess carriers are introduced to a direct band gap semiconductor, the probability is high that the electron and holes will recombine directly because the bottom of conduction band, जो conduction क्योंकि ज्यादा हो गए, आपने जैसे ही आपने चार्ज कैरियर्स को भेजा ज्यादा हो गए, bottom of conduction band and the top of the valency band are line up. बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा कि कंडक्टर्स में होता था, कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते थे. अब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, वैलेंसी यहाँ पर है, तो इनके रिकॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और ऊपर से नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. द रेट ऑफ डायरेक्ट recombination is expected to this proportional, so that's why here it is taken as R. So GT is already there, so this has been taken by the R, and this R is depending upon what? Depending upon the propagation constant. जो propagation constant है beta is the proportionality form, N is the charge carrier concentration of electron, P is the charge carrier concentration of hole. When beta is proportionality constant, as discussed previously, in thermal equilibrium, the combination rates must be balanced by the generation rate. Therefore, for an N type semiconductor, we have GTH equals to RTH, और ये सब आपस में होने चाहिए बराबर. In this notation, the carrier concentration of first substrate refers to the type of semiconductor. The subscript not indicates an equilibrium quantity. जब equilibrium में तब represent कर रहे हैं उसको N and naught से, P and naught से, जब equilibrium condition है. Holes density respectively to the N-type semiconductor at thermal equilibrium. When we shine a light on semiconductor to produce electron-hole pairs at a rate GL. अब देखो, when we shine a light on the semiconductor, अब यहाँ पे क्या किया गया? We are producing some photons. हम उसको injection वाला process कर रहे हैं. अब हमने उसको कुछ photon दिए, तो photon देने से क्या होगा? We are providing some energy. तो जो valency electrons होंगे वो GL rate से, तो that's why this GL is taken because of this light. Photon expose किए उसके ऊपर, photon डाले उसके ऊपर. जब when we are imposing the photons on then it becomes GL. So this is to be taken as GL. So now the total rate, if we see here, if the notion of this, we have taken already this one. So now the talk is here, when we shine a light on the semiconductor to produce electron hole pairs at a rate GL, the carrier concentration are above their equilibrium values. The recombination and generation rate will become R. We have already taken Bn and Pn. So now this naught is not here, only Nn, Pn, which is equals to what? Nn naught. So this Nn is equals to Nn naught, और अब कुछ बढ़ गए, delta n बढ़ गए. So that's why this is not Nn naught plus delta n, और P भी कुछ बढ़ गए. So this is Pn naught plus delta P. So Nn naught plus delta n, Pn naught plus delta P.
So this is basically nn naught plus delta n and pnn naught plus delta p. So ultimately this has become r. So now the net rate, net recombination rate will be changed. So what we have taken, हमने लिया starting में nn naught condition थी, pn naught starting की condition थी. अब हमने इंजेक्शन प्रोसेस किया, इंजेक्शन प्रोसेस करते ही अब जो कॉन्सेंट्रेशन nn naught थी वो बढ़ गई, चेंज हो गई. कितनी बदल गई? डेल्टा n. पी एन नॉट थी वो कितनी हो गई? डेल्टा पी और बढ़ गई. तो न्यू कॉन्सेंट्रेशन इज नाउ एन एन पी एन. सो बीटा एन एन नॉट प्लस डेल्टा एन पी एन एन नॉट प्लस डेल्टा पी. सो नाउ दिस जी इक्वल्स टू जी एल प्लस जी टी एच. सो नेट रेट जो ग्रोथ रेट होगा, दिस ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू basically g equals to gl plus gth. So how this delta n can be indicated? Delta n is a difference of this one. Delta p can be this one. तो हम जानते हैं, if we are looking to find out the rate of change, so this rate of change can easily be find out delta pn upon dt g minus growth और recombination. भाई कितने जनरेट हो रहे हैं, कितने बचे, हाउ मेनीज आर देयर, कितने बचे, कितने जनरेट हुए, किससे पता चलेगा? जनरेशन माइनस रिकॉम्बिनेशन. सो जनरेशन माइनस रिकॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज किया, z माइनस आर. वी हैव gl प्लस gth माइनस आर. सो दिस इज द रिकॉम्बिनेशन रेट इन स्टडी स्टेट. अगर स्टडी स्टेट हो गई है, मतलब रेट का मतलब क्या हुआ, अब बन रहे हैं लेकिन 10-10 बन रहे हैं. ऐसा नहीं हो रहा आज 10, अभी 10, फिर 11, फिर 15, फिर 16. होल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन होल कांस्टेंट रेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो जब रेट कांस्टेंट हो जाता है, मतलब नंबर फिक्स हो जाते हैं कि 50 ही बनेंगे, 60 ही बनेंगे, ऐसा नहीं होगा 60 फिर 70 फिर 80 फिर 90. तो इस कंडीशन में वी से स्टेडी स्टेट हैज कम. इट मींस rate is now 0. So when the rate is 0, this can be represented as ZL equals to R minus GTH equals to U. So that has been taken as the equivalent situation as the U, where U is the net recombination. भाई R क्या था? Recombination था, ये growth थी, ये light की वजह से, तो ये balance हो जाएगा. मतलब जितने light की वजह से produce हो रहे हैं, उतने recombination और growth की वजह से minus हो रहे हैं. और इसको हमने balancing situation में U से indicate कर दिया. सो फाइनली सिंप्लीफाइंग ऑल दिस वन, इन सब की जगह पर उठाकर हमने ये रख दिया. सो व्हाट वी आर गेटिंग, इफ यू सी हियर इन दिस इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन में हमने उठा के यहाँ पर अगर हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो दिस u इज इक्वल्स टू बीटा एन एन नॉट प्लस पी एन एन नॉट प्लस डेल्टा पी. एंड बिकॉज इट इज डिपेंडिंग अपॉन द दिस डेल्टा पी, दैट्स व्हाई दिस डेल्टा पी इज हियर. कंपैरिजन किया, पी एन नॉट कम है, लो लेवल इंजेक्शन है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, अंडर दिस कंडीशन ये बहुत छोटा होगा. सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन को यूज किया, सो वी कैन नॉट से पी एन माइनस पी एन नॉट. कंपैरिजन किया ना, पी एन माइनस पी नॉट, और डेल्टा पी तो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, लो लेवल इंजेक्शन होगा. सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी एन माइनस पी एन नॉट अपॉन 1 अपॉन दिस. So this is all taken in equivalence of this one. Low level injection के लिए that has been taken, the values has been substituted for this one delta p, and finally what we are receiving this equivalence. And when we are receiving this equivalence, so we can say the net recombination rate is proportional to excess minority carrier concentration. U equals to 0 is a thermal equilibrium. The proportionality constant 1 upon beta n naught is called as a lifetime tau p, and excess minority carriers. So this is the what exactly the equation we are finding with respect to the recombination stability. और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? Thermal equilibrium की बात कर रहे हैं. So I hope so you all might be able to understand this one. And I'm just pausing. That case is simply indicating like here. So it is simply indicating that here in this condition we have a certain band gap. Like we have a valency band, we have a conduction band. तो जो इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर जनरेट हो रहे हैं उनको हमने बोला GTH, जनरेशन रेट. जनरेट हुआ इलेक्ट्रॉन, ऊपर चला गया कंडक्शन बैंड में, वैलेंसी बैंड में होल रह गया, ये जनरेशन हो. कुछ टाइम बाद अपनी एनर्जी को जब वो लूज करेगा, नीचे आएगा, तो उससे रिकॉम्बिनेशन होगा, दैट इज RTH. इक्विलिब्रियम सिचुएशन में GTH और RTH एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि जितने जनरेट हो रहे हैं दैट सेम आर फॉलिंग डाउन, जितने जनरेट हो रहे हैं दैट सेम आर फॉलिंग डाउन, उतने ही रिड्यूस भी हो रहे हैं, रिकॉम्बाइन भी हो रहे हैं. पर स्पेशल केस, जब स्पेशल केस में हम यहाँ पर
इस सिचुएशन को देख रहे हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पे कैरियर इंजेक्शन किया, यानी हमें जरूरत है अब एक्स्ट्रा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की। अब जब हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तब हमने यहाँ पर एक लाइट एमिशन किया, इंजेक्शन प्रोसेस किया और फोटोन की एनर्जी दी। फोटोन की एनर्जी की वजह से जो जनरेशन रेट बढ़ा वो कहलाया जीएल, ऑलरेडी था जीटीएच, ऑलरेडी था, अब जो रिकॉम्बिनेशन रेट हुआ वो हो गया आर। अब इनकी हेल्प से हमने यहाँ पे इक्वेशंस को डेवलप किया है, एंड दोज इक्वेशंस आर गिविंग अस द रिजल्ट. Already you have people understand about that. I have just already taken this one. This is giving a result in terms of u. So we have just taken this as a constant. If you see here, so u is the net recombination rate. तो हमने यहाँ पे u को माना net recombination rate. ये net recombination rate depend करता है किस पर, बीटा. बीटा हमारा होता है proportionality constant है, nothing special. एन एन नॉट जो हमने डिफाइन किया वो हमने डिफाइन किया नॉट, जब इंजेक्शन नहीं किया था तब इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी। डेल्टा पी चेंज, कितना चेंज आया। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, इफ यू सी हियर, if we nullify this equation, so this equation is Pn minus Pn naught. So Pn minus Pn naught, Pn इंडिकेट करता है होल्स कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट में, Pn नॉट इंडिकेट करता है पुरानी होल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, होल कॉन्सेंट्रेशन, ओरिजिनल होल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी। तो होल कॉन्सेंट्रेशन नाउ एंड होल कॉन्सेंट्रेशन लेटर ऑन, उन दोनों ही सिचुएशन में कितनी हमारी होल कॉन्सेंट्रेशन थी, ये यहाँ पर इंडिकेट करता है Pn माइनस Pn नॉट। तो डेल्टा पी वही तो हुआ, Pn नॉट पहली, Pn अब की, डिफरेंस आ गया डेल्टा पी। डिपेंडिंग अपॉन दिस 1 अपॉन बीटा एन नॉट, ये उठा के हम यहाँ से इसके नीचे ले गए। सो डेल्टा पी कैन बी रिटन एज Pn माइनस Pn नॉट, 1 अपॉन बीटा एन नॉट हैज बीन टेकन एज द डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर में उठा के ले गए, 1 अपॉन एन बीटा नॉट बना दिया। अब जब हमने इसको देखा तो देखने के बाद हमने इसको कंपैरिजन किया, एंड वी कैन से the net recombination rate is proportional to excess minority carriers. किसके बराबर है, जो minority carriers बढ़े, डेल्टा पी के बराबर। Obviously U equals to naught is a thermal equilibrium, यानी कि जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, Pn और Pn नॉट, मतलब कुछ बढ़े ही नहीं, जब बढ़े नहीं तो इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम में U जीरो के बराबर हो जाएगा। The proportionality constant 1 upon beta n naught is called lifetime tau p. ये लाइफ टाइम मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब ब्रेक हुआ होल से, कंडक्ट करता है, कंडक्शन बैंड में जाता है, कंडक्ट किया, कंडक्ट करने के बाद, कंडक्ट किया, कंडक्ट करने के बाद कितने टाइम तक रिकम्बाइन होने से पहले रहता है, ये कहलाता है उसका लाइफ टाइम। ब्रेक हुआ, चलता गया, और उससे पहले कब रिकम्बाइन हुआ, दिस इज कॉल्ड एज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। So this is the lifetime process and tau p is excess minority carriers. तो इस तरीके से हम इसका lifetime calculate करते हैं। If we see here, so this equation can be represented as Pn minus Pn naught upon tau p, and tau p can be written as this one. So the physical meaning of this lifetime can best be illustrated by the transient response. मतलब transient response मतलब एक इलेक्ट्रॉन होल से टूटा, बॉन्ड से टूटा, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, कंडक्ट किया, कंडक्ट करके वापस रिकम्बाइन कर गया, तो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिएंट। अपनी स्टेबल स्टेट उसकी कोवलेंट बॉन्ड थी, कंडक्ट करके आ गया, फिर अपनी स्टेबल स्टेट में आ गया, दैट्स ऑल। तो दिस इज ऑल। सो वी आर प्रपोजिंग, इफ सी सी हियर, हमने यहाँ पे फोटॉन्स को डाला, इस तरीके से चार्ज किया, तो फोटॉन्स की वजह से ये देखो यहाँ से यहाँ तक इसका मूवमेंट हुआ, कंडक्शन पॉइंट में गया, जीरो हुआ। लेट्स सी इन टाउ पी, अब ये अपनी स्टेबल स्टेट से वापस इस स्टेट में आने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज अ टाउ पी प्रोसेस, एंड दैट कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ पीएनटी एंड पीएन नॉट that has been given. So the light pulses are indicating and showing this kind of a variation happens. मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, टॉप पे गया, टॉप पे जाने के बाद धीरे 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 वो नीचे आया, टॉप पे गया, और टॉप पे जाने के बाद वो धीरे 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 फॉल डाउन हो गया। ये जब फॉल डाउन हुआ था, इसका मतलब वो वापस से बैलेंसी में आ गया। सो कंडक्शन, कंडक्शन एंड देन फॉलिंग डाउन। ये तो ये जो टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, इसको हमने उसका लाइफ टाइम से डिफाइन किया। दिस बेसिकली ऑल अबाउट आई वांटेड टू टेल यू ऑल, है ना, ये दिस इज एग्जैक्टली द मीनिंग। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन के लिए हमने टाउ पी की बात करी, ठीक है। मूविंग अहेड, हम लोगों ने एक और चीज कैलकुलेट की थी इन द रिलेशनशिप, जो नई कॉन्सेंट्रेशन होगी किसकी, होल्स की, ये पुरानी कॉन्सेंट्रेशन और जो ग्रोथ हो रही है, कितने टाइम में कितनी ग्रोथ हुई, इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर।
तो नई जो ग्रोथ थी, क्योंकि हमने डेल्टा पी को यहाँ पे दिया था, इफ यू सी हियर, ये दिस इज द डेल्टा पी डिपेंडेंट अपॉन डेल्टा टी, डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो इक्वेशन ली थी u और इसके बराबर था डेल्टा पी, दैट वी आर सब्स्टिट्यूटिंग हियर यहाँ पर। और हमें पता चला कि जितने टाइम में जो ग्रोथ हुई, उस ग्रोथ से आप उसको लिए तो डेल्टा पी पता चल जाएगा। किसी पर्टिकुलर टाइम पे t इक्वल्स टू 0 पर आपने ये सारी इक्वेशन यूज की, तो पी एन इक्वल्स टू पी एन नॉट टाउ पी जी एल, ये आपकी मेन इक्वेशन आई, जिससे आपकी t इक्वल्स टू 0 पे। अब अगर मान के चलो धीरे धीरे समय बढ़ना शुरू होता है और इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर जाता है, तो ये पी एन किसके बराबर हो जाएगा, पी एन नॉट के, क्योंकि उस समय तक वो कैरियर अपने आप ही फॉलो ऑन हो जाएगा। तो अगर हम रेट निकालना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रेट dpn अपॉन dt दैट इज इक्वल्स टू gth माइनस r, पीछे हमने इक्वेशन में लिया था, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये फॉल डाउन है, ग्रोथ रिड्यूस हो रही है, सो दिस विल बिकम लाइक दिस वन। सो द सेम इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड विद फॉर द pnt is pn not tpgl, और एक्सपोनेंशियल डिके है क्योंकि, so that can be represented this one. So this is exactly the meaning or to give you this particular fall down. तो ये जो fall है वो fall exponential fall है, and this exponential fall can be find out. तो इस इक्वेशन से आप पता कर सकते हैं, this is a very wonderful equation, बड़े आराम से पता कर सकते हैं कि बताइए अगर आप अभी आपका पी एन नॉट ये है इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक, आपने इसमें लाइट डाला, इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद में अब आपका जीएल हो गया रेट, ग्रोथ का रेट कितना हो गया जीएल। तो अब आपकी न्यू कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो न्यू कॉन्सेंट्रेशन के लिए फॉर्मूला हो गया पी एन टी इक्वल्स टू पी एन नॉट प्लस टाउ पी जी एल एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी अपॉन टाउ पी। इस रिलेशनशिप की हेल्प से आप आराम से निकाल सकते हैं। So this is basically my today's objective to make you understand. I hope so you all might be able to understand that. You might be okay with this one. So if somebody has some sort of the doubt, may ask